गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू नेटगेट फोरम। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में। तो क्लासिकल मैकेनिक्स का कोर्स हमारा आज से स्टार्ट होगा। क्योंकि ये पहली क्लास है क्लासिकल मैकेनिक्स की, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स का सिलेबस क्या है, CSIR नेट और IIT जैम का। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द कोर्स आई वांट टू प्रीच समथिंग, ओके, that you should listen carefully. Okay, so whenever you are preparing for any kind of examination, whether they are CSIR net, IIT JAM, okay, first of all go through its syllabus. पहले इसका syllabus को आप thoroughly study कीजिए, इसको समझिए, syllabus को समझने की कोशिश कीजिए। एंड अकॉर्डिंग टू स्टडी ऑफ सिलेबस, एनालिसिस ऑफ सिलेबस, एक बाउंड्री को ड्रॉ करना जरूरी है, ठीक है, कि दैट इज व्हाट इज नीडेड फॉर द एग्जामिनेशन एंड व्हाट इज नॉट नीडेड फॉर द एग्जामिनेशन। ओके, इन जनरल होता क्या है, सिलेबस जो था काफ़ी वेग फॉर्म में होता है। ओके, बट इफ यू विल सी द पैटर्न ऑफ लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन बैंक, ओके, तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो सिलेबस को लेकर जो वेगनेस है, अनक्लैरिटी है, ठीक है, क्लैरिटी नहीं है, वो क्या होता है, वो आपका क्लैरिटी मतलब वो जो अनक्लैरिटी है, वेगनेस, वो ग्रेजुअली क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, सो पहला काम क्या करना है, पहला काम आपको ये करना है कि यू हैव टू गो थ्रू द सिलेबस, देन यू हैव टू सी द क्वेश्चन बैंक ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग चैप्टर, वॉट एवर चैप्टर यू आर स्टडिंग। जैसे हम लोग स्टार्ट करें क्लासिकल मैकेनिक्स कोर्स को, ठीक है। अब क्लासिकल मैकेनिक्स से मान लीजिए एक टॉपिक है स्टेबिलिटी एनालिसिस। सो स्टेबिलिटी एनालिसिस के पहले हमें क्या करना है, थ्योरी पढ़ना है, हमें लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन बैंक को देखना है। फिर हमें देखना है कि जो लास्ट 10 ईयर है उसमें जो स्टेबिलिटी एनालिसिस जो पर्टिकुलर चैप्टर है क्लासिकल मैकेनिक्स का, ठीक है, उसमें किस पोर्शन से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि एग्जाम के डिमांड के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर पोर्शन पे ज़्यादा एम्फेसाइज करना है। ओके, सो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम डायरेक्टली सिलेबस पे जंप करते हैं। ओके, सो सिलेबस के अंदर पहला जो पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है, पहले हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट के सिलेबस को। तो सिलेबस के अंदर पहला पॉइंट लिखा है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो यहाँ पे आपको न्यूटन्स लॉ के बारे में पढ़ना है, बट ये न्यूटन्स लॉ वो लॉ नहीं है, ठीक है, जो आपने डिस्कस किया था अपने +2 वाले कोर्स में। ये जो लॉ है ये थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ लॉ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेन इसका तरीका ये है, मेन यहाँ पे लॉज ऑफ मोशन को समझाने का तरीका ये है कि कहीं ना कहीं लॉज ऑफ मोशन का लिमिटेशन है। ओके, तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि लॉज ऑफ मोशन जो है, ठीक है, उसके बदले हम एक नया तरह का फॉर्मुलेशन लेकर आएंगे जिसको बोलते हैं लैग्रांजियन हैमिल्टोनियन। ओके, जो आपके MSc कोर्स का पार्ट है। ओके, तो यहाँ पे जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो पहले हम पढ़ेंगे पार्टिकल के बारे में, पार्टिकल फिजिक्स, और फिर हम पढ़ेंगे सिस्टम फिजिक्स। ठीक है, तो सिस्टम फिजिक्स का मतलब यहाँ पे ये होता है कि पहले हम पढ़ेंगे सिंगल पार्टिकल के ऊपर, दैट इज कॉल्ड पार्टिकल फिजिक्स। यहाँ पे हम पढ़ेंगे पार्टिकल फिजिक्स के ऊपर न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, देन जो कलेक्टिव ऑफ पार्टिकल होता है उसको बोलते हैं रिजिड बॉडी। क्लियर है, तो वहाँ पे मेनली हम डील करेंगे सेंटर ऑफ मास के बारे में, सेंटर ऑफ मास कंजर्वेशन के बारे में, रिजिड बॉडी डायनामिक्स के बारे में। दीज आर एक्चुअली न्यूटन्स लॉज। ओके, देन व्हाट डू मीन बाय डायनामिकल सिस्टम, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। देन हम डिस्कस करेंगे फेज स्पेस डायग्राम के बारे में। ओके, देन वी विल डिस्कस अबाउट स्टेबिलिटी एनालिसिस। ओके, देन नेक्स्ट इज सेंट्रल फोर्स मोशन। ओके, तो सेंट्रल फोर्स मोशन का मतलब होता है कि सेंट्रल फोर्स आर दोज फोर्सेज, ओके, that is directed towards the center, that is called central force. Okay, for example force of gravitation। तो force of gravitation में क्या होता है, मान लीजिए कि there is an elliptical orbit। so in this elliptical orbit, ठीक है, in ellipse there are two foci। okay, so on one of the foci, ठीक है, one of the focus sun is situated। okay, और sun is based। तो सपोज कीजिए सन कहाँ पे, एक इलिप्स के किसी एक फोकस पे है। अब अर्थ क्या कर रहा है, अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो ऑलवेज अर्थ और सन के बीच का जो फोर्स होगा वो क्या होगा, सन के डायरेक्ट मतलब सन के टुवर्ड्स होगा, वाई टुवर्ड्स सन। क्योंकि आप जानते हैं कि दो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में मास के कारण जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। और जनरली क्या होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन जो होता है वो लार्जर मास के टुवर्ड्स होता है। तो आप जानते हैं कि सन का मास क्या है, अर्थ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हेवी है। ठीक है, दैट्स वाई फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, वो ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा, क्या कहते हैं, सन के टुवर्ड्स। ओके, यानी फोर्स क्या होगा, फोर्स सेंटर की तरफ होगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्स मोशन। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे टू बॉडी कॉलिजन के बारे में। ओके, तो टू बॉडी कॉलिजन में क्या होता है, स्कैटरिंग होता है लेबोरेटरी फ्रेम के अंदर और सेंटर ऑफ मास फ्रेम के अंदर, ये हम डिस्कस करेंगे। रिजिड बॉडी डायनामिक्स और मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर। And then we have to discuss about non-inertial frame. You know there are two kind of frame, inertial and non-inertial frame. So inertial frame are those frame that are not moving with respect to other frame of reference. Okay, and non-inertial frame are those frame that are moving with respect to some other frame. So those frame that are moving, that is called non-inertial frame. So we have to discuss about non-inertial frame, and in non-inertial frame there is a force that act in this frame, that is called pseudo force or false force. Okay,
So there are various examples of pseudo force, for example, centrifugal force, for example, Coriolis force. These are examples of pseudo force, and in your syllabus you have to discuss about pseudo force. You have to discuss about pseudo force in general. Okay, then you have to discuss about two special kind of pseudo force, that is centrifugal force as well as Coriolis force. This you have to discuss. Next is variational principle, generalized coordinate, and on the basis of generalized coordinate we will formulate new kind of mechanics that is based on Lagrangian Hamiltonian. So that is called Lagrangian Hamiltonian formalism and equation of motion. Then conservation law and cyclic coordinate, periodic motion, a small oscillation, normal modes. Okay, then we have to discuss about a special theory of relativity, Lorentz transformation, relativistic kinematics, and mass energy equivalence. So these are the syllabus. Okay, तो एक्चुअली इफ यू विल सी द सिलेबस ऑफ CSIR नेट, तो सिलेबस को दो सेक्शन में डिवाइड करते हैं, पार्ट ए पार्ट बी. तो ये पार्ट ए का सिलेबस है. ओके, और पार्ट बी के अंदर कुछ एडवांस टॉपिक होता है. तो जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स हमको डिस्कस करना है डायनामिकल सिस्टम के बारे में, फेज स्पेस डायनामिक्स के बारे में, स्टेबिलिटी एनालिसिस के बारे में, पॉइसन ब्रैकेट एंड कैनोनिकल कंजुगेट के बारे में, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे होगा, ये गलत लिखा गया है. ओके, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन. Then we have to discuss about symmetry, invariance, and Noether theorem, and we have to discuss Hamiltonian-Jacobi theory. So these were the syllabus of CSIR net classical mechanics. Okay. Now if you will go to the syllabus of JAM, तो यहाँ पे syllabus थोड़ा सा different हो जाता है. ठीक है, तो JAM में क्या पढ़ना है आपको? JAM में पढ़ना है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन. ठीक है, तो ये एलिमेंट्री मतलब लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ना है आपको. ठीक है, तो यहाँ पे मेनली आपको BSc पार्ट 1 का ये कोर्स है. Then we have to discuss about velocity acceleration in Cartesian, polar and cylindrical coordinate system. तो ये भी थोड़ा गलत यहाँ पे वो हो गया है. Okay, these are on side of typist. Okay, not on my side. Okay, so we have to discuss about velocity and acceleration in Cartesian coordinate system, polar coordinate system as well as cylindrical coordinate system. ठीक है, so this we will discuss. Then we have to discuss about uniformly rotating frame. Okay, uniformly rotating frame का मतलब क्या होता है कि frame is at मतलब फ्रेम्स एक्सेलरेशन इज 0. ठीक है, तो दोज फ्रेम हु आर रोटेटिंग यूनिफॉर्मली, ओके, दे आर कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम, एंड दोज फ्रेम which are rotating non uniform, that is called non rotating frame. ठीक है, so in non rotating frame there are two special kind of pseudo force, okay, that act. So first one is centrifugal force, second one is Coriolis force. Okay, so we will discuss about centrifugal force and Coriolis force. Then we have to discuss about motion under central force, Kepler's law, gravitational law and gravitational field. We have to discuss about a special kind of forces that is called conservative force and non-conservative force. ठीक है, so in general, conservative force are path independent, मतलब it only depends upon initial and final point of the path, and it is independent of nature of path. And non-conservative forces are those forces that depend upon nature of the path. Okay, system of a particle, this we have to discuss in your syllabus. Then we have to discuss about center of mass. Then we have to discuss about equation of motion of center of mass, conservation of linear momentum as well as angular momentum, conservation of energy, variable mass system. The example of variable mass system is rocket. Okay, rocket equation is example of variable mass system. Then we have to discuss about elastic and inelastic collision, rigid body dynamics, fixed or axis rotation, rotation and translation, moment of inertia and product of inertia. I'm just reading the syllabus. Okay, parallel and perpendicular axis theorem, principal axis and moment, kinematics of moving fluid, equation of continuity, Euler's equation, and Bernoulli theorem. So these are the syllabus of IIT JAM physics. Okay, now what are the standard sources you have to follow during this course? Okay, so during this course I will follow these books. Okay, so I will follow Goldstein. It is one of the best book, okay, for classical mechanics. I will follow Klapner-Kollenkopf. These are two standard foreign author books. Okay, in Indian author I will follow J.C. Upadhyay. And along with this book, okay, you have to do selective reading of these books, because the book is written, okay, written, and book has lots of those concepts that are not part of your syllabus. Okay, so you have to read these books only in accordance with the demand of the examination. Okay, and how will you find out the demand of examination? By analyzing question bank and syllabus pattern. Okay, so I will follow these three books: Goldstein,
Clapton and J.C. Upadhyay. These three are very standard book for classical mechanics. Okay, friend. So in class 2, we will start with some new topic. Okay, I think I will start with Newton's law, because Newton's law is common in CSIR net as well as IIT JAM both. Okay, so we will start from this. So if you like our classes, okay, you can share our videos. Okay, and also you may join and subscribe channel. Okay, so thank you for your patience. We are meeting in second class with some new topic. Okay.